Hey, so let's look at what I mentioned yesterday in my post market. Was the plan was to basically look for buying opportunities if day low breaks. My buying opportunity was 20 MA. So and the stop loss was in spot 17020. So this was a good trade. I was expecting this high to be taken out, and that is where I lost my 50% profits. So I booked 50% when this 17199 was broken future, and rest 50 I trailed below this. So this was I was not really expecting this. I was just waiting for the Nifty spot to break that high, and that did not happen. So I almost lost 100 points in profits. Anyways, uh, coming to Bank Nifty, I shared a trade in the morning on my channel. Look for buying opportunities in Bank Nifty at VWAP, Hero Zero because expiry. And if you're buying futures, stop loss day low at 10:10. Bank Nifty at 10:10 was here. Wanted this to come to VWAP, so it came to VWAP and gave you almost on 200 points. Good trade. This was one more good trade. And yeah, one more I shared on my channel. Basically, on my social channels, basically this did not trigger. Why? Because 12:45, the trade was basically 12:45 at VWAP. If at VWAP, buy above 12:45, stop loss 12:45 low, and that did not happen. So that was this. Coming to volumes, Bank Nifty did not really have any good volumes in the morning. So I was a little worried about about something like this. Wasn't really expecting it. I would, because I did not really book my 50% profits. I was expecting this to move towards high and towards say this. So this 145 was probably the low I was expecting to be made today, and anyways did not really chase this or do reversal trades. The only thing I missed is my profits. Anyways, coming to this, it was a buy, so no brainer here in the morning, and I usually don't sell after 2 once this breaks, because you really don't know what is going to happen. So can't really comment on this move, but this was a no-brainer. If good volumes buy towards buy, then you don't look for a sell till this is broken. So I was already in the buy position, and I had taken buys around lows, so I didn't really have to buy again here, and I did give this trade. So this was a perfect trade for buy, because this was also in setup. So good day. The only regret I have is not booking at 250 levels, ended up booking at 150 levels. So almost missed 100 points. What do I do tomorrow? So interesting closing. I don't really know. So if there's a big gap down, I will look for buying opportunities, keeping this as stop loss. If there is no big gap down and this high is broken, then I have no plans. So only plan is if there's a big gap down, I look for buying opportunities, keeping this as stop loss. So but that doesn't really mean I'll buy somewhere here around 16,900 levels, because this stop loss will then be 16,825, so I'll look for a 50 point risk, not more than that. If I get it, I'll take the trade, otherwise I won't. Yeah, that's the only plan. Thank you. कल का पोस्ट मार्केट देखते हैं. कल के पोस्ट मार्केट में तो बेसिकली वही हुआ जो मैंने बोला था. अगर मैंने बोला था कि डे लो अगर तोड़ता है तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा. मैंने बाई किया इसको 20 MA पे, मूविंग एवरेज 1 आवर, और मेरा टारगेट था ये हाई टूटने का. उसी में मैं फंस गया. बेसिकली मैंने 50% तो यहाँ बुक कर दिया था जब ये टूटा था 200, और उसके बाद मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली एग्जिट करने के लिए. 240 भी गया था ये, तो मैंने ट्रेल कर लिया था स्टॉप लॉस इस कैंडल को 11 लो को, और वहीं मैं फंस गया. बेसिकली 250 का जो प्रॉफिट बुक करना था वो मैंने 150 में बुक किया. वो ये एक रिग्रेट है, चलेगा. बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेड दिया था सुबह अपने चैनल पे कि जब 10 o'clock 10:10 पे बैंक निफ्टी बाय करिए वीवैप पे, और हीरो ज़ीरो है क्योंकि एक्सपायरी है, फ्यूचर कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस डे लो. 200 पॉइंट्स दिया उसने ऑलमोस्ट यहाँ पर, और ये लिखा भी था मैंने जब एग्ज़िट करने के टाइम पे कि 200 पॉइंट्स मिल गए करके. तो ये एक और ट्रेड था. एक ट्रेड जो मैं यूजुअली देता हूँ सिस्टम ट्रेड, उसमें वो ट्रिगर नहीं हुआ. ट्रेड ये था कि 12:45 अगर वीवैप पे है तो बाय उसके ऊपर, स्टॉप लॉस 12:45 लो, लेकिन 12:45 वीवैप पे नहीं था, इसलिए ट्रिगर नहीं हुआ ये ट्रेड.
वॉल्यूम्स देखेंगे तो कोई वॉल्यूम्स नहीं थे बैंक निफ्टी में, इसलिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। निफ्टी में वॉल्यूम्स आए थे बाय, तो मैं ऑलरेडी लो के यहाँ डे लो के आसपास बाय पे था 20 MA पे 1 आवर, जो कि मेरा सुबह का प्लान था, इसलिए मैंने ये बाय नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जब ये आई तो मैंने बैंक निफ्टी बाय किया, और वो भी मेरे सिस्टम में ट्रेड था जो मैंने शेयर किया था चैनल पे। तो ये सिंपल रूल है, इसको ये जब तक टूटे नहीं तब तक इसको सेल नहीं करिए। बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी जो ये गया, और ये 2 बजे के बाद मैं यूजुअली करता नहीं हूँ, ये अगर ट्रिगर होता है तो 2 बजे के बाद ये ट्रिगर हुआ, इसलिए मैंने ये सेल नहीं किया। और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा था इसलिए। तो कल का अब मेरा क्या प्लान है, अगर ये गैप डाउन होता है और अच्छा खासा गैप डाउन होता है और मुझे यहाँ पर एक 50 पॉइंट्स का रिस्क मिलता है तो मैं बाय करने के लिए देखूँगा, अगर स्ट्रक्चर अच्छा लगे तो। अगर ये नहीं हुआ गैप डाउन तो मेरा कोई प्लान नहीं है। अगर अच्छा खासा गैप डाउन होता है तो ही मैं बाय करने देखूँगा। स्टॉप लॉस ये रहेगा, ये नहीं। थैंक यू।